सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। Okay. तो यार अभी तक जो पुरानी सारी वीडियोस से हमने बहुत सारे कॉलेजेस कवर कर लिए। एनआईटी एनआईटी के बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हमने कवर करी। उसके अलावा हमने बीएचयू कवर करा, डीयू कवर करा, डीयू एमएससी कवर करा, और भी बहुत सारे कॉलेजेस पे और कोर्सेज पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यार अभी एक और इन डिमांड कॉलेज था जो कि है IGDTU। तो यार ये जो लड़के देख रहे हैं वो अभी के लिए ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है कॉलेज। और हमारे साथ यार यहाँ पर पास आउट है IGDTU से अक्षिता। तो सबसे पहले मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आई और अपनी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है कॉलेज की वो शेयर करने के लिए एग्री हुई। तो यार अक्षिता, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी इंट्रोडक्शन। आपने बैचलर्स कब करी, आप कब पास आउट हुए, और आपने इसके लिए कैसे प्रिपेयर करा? Okay. So hi everyone. First of all, thank you so much, Vasu, for calling me here. Uh, I did my bachelor's in mathematical sciences from University of Delhi. I did my bachelor's in 2014 to 17. So my batch will be 14 to 17. And in 17, I have given certain entrance exams, out of which one was IGDTU-MC entrance exam. I've qualified it with rank 15. And then I've came here for the admission, and I have completed my MCA from IGDTU last just few weeks back. So I am of class 2020, and yeah. ओके। तो यार आपने इनकी इंट्रोडक्शन एक बारी देख ली, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार आप IGDTU को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगी? ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका कॉलेज कैंपस कितना बड़ा है, और इसकी कोर्स की डिटेल्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अगर आप सबको देना चाहो तो। Okay, so coming to MCA or IGDTUW, the campus is Kashmiri Gate. It's a new technical university for women, and it's the first one in the capital. So I would rather say that it's situated in Kashmiri Gate, and it's nearby the metro station of Kashmiri Gate. And the campus is not that huge, but it is certainly okay for girls for having fun and having certain kind of studies in as well. So all the computer labs, libraries, and all the facilities are very much available 24/7. Gym and certain medical issues is also can be resolved out there. So medical issues are always. And one thing that I wanted to say is that IGDTU is made in certainly बहुत आप कह सकते हो कि कुछ लोग कहते हैं that it is a खंडर part of thing. Yeah. So I won't say that it is a खंडर. It's basically the part is that it is a prestige heritage university campus wherein you can see yourself like एक पुराना campus जैसे आपने IGDTUW बना दिया है. So the new campus has been building up somewhere in Saket or somewhere. So I would rather say that we will get shifted out there once we are okay with it. But particularly what we are doing right now is that we are having certain constructions out there, and we are trying to make our campus more elaboratively high and okay for our consumption uses. Okay. And coming to the part is like canteen is not like really well, but there is Nescafe cafe out there, so you can try out that. And there is one situation is there that campus is very much elaborated and connected with Ambedkar University. So you can go, both the students of the universities, both the universities can come across each other, and they can go back to their university as well and use the campus of both the universities. So that is a good part. ओके। तो आई होप कि आपको इसी से पता लग गया होगा कि IGDTU के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है और उसके कैंपस के बारे में पता लग गया होगा। उसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि यार कि MCA 2 साल की होने वाली है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि IGDTU में, क्योंकि वो AICTE अप्रूव तो है ही, बीटेक है वहाँ पर, तो क्या वो 2 साल की होगी वहाँ पर MCA? Yes, exactly. And the admissions have already been started. So I think MCA 2 साल की IGDTU में जरूर होगी, और I would rather say that everywhere it is compulsion now कि 2 साल की ही होगी. तो I would rather say कि admissions के लिए preparations सेम रहेंगी, बट जो कोर्स टाइमलाइन है वो कम हो गया है. सो इट इज नॉट लाइक कि अब MCA प्रोफेशनल डिग्री नहीं है. आई वुड रादर से कि बस टाइमलाइन कम है, बाकी इम्पोर्टेंस और आपका जो टाइम कंस्ट्रेंट, आपकी जो कंसंट्रेशन चाहिए होगी वो हमेशा सेम ही होगी. सो इन IGDTU एज वेल आपको सेम पढ़ाई करना होगा, सेम एग्जाम स्ट्रक्चर होगा, बस वो 2 साल की होगी. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो यार जब 2 साल की हो जाएगी तो उसके कोर्स स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आपको पता है कि क्या होगा? और जो फीस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो इंटर्नशिप्स होती थी थर्ड ईयर में,
उसमें कुछ चेंजेस होंगे? Yeah. आपके हिसाब से Okay. कोई आइडिया? If it हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जितना मुझे पता है उस हिसाब से जब 2 साल की हो जाएगी तो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। मतलब उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया होगा उसी को फॉलो करेंगे और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो किस तरीके से रखे जाएंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंसेस नहीं था। उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है 2 साल का एमसी। सो उसके केस में हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और हम लोगों को कोर्स स्ट्रक्चर उस हिसाब से देखना पड़ेगा सो दैट कि हम अपने इलेक्टिव्स उस हिसाब से चूज कर पाए जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं। ऑल्सो इस केस में ये होगा कि हो सकता है कि हमारे केस में जो 2-3 साल की जो थी हमारे केस में फर्स्ट ईयर में हम लोगों को 80,000 रुपीज देना होता था। ओके और सेकेंड ईयर में हमने 75,000 पे किया था एंड थर्ड ईयर में फिर से 80,000 पे किया था। सो इट्स लाइक दैट। सो कमिंग हियर इट्स लाइक 88,000 रुपीज फॉर वन फर्स्ट ईयर। मतलब इनिशियली जब आप एडमिशन लेंगे तो आप इतना पे करेंगे और सेकेंड ईयर में आपका 80 to 85,000 तक का रहेगा आपका फी स्ट्रक्चर। और कमिंग टू internships, I've left with internships. I think masters में 6 months is always about internships, so internships will be there, and also the 2 months internship that we had in between second year and third year or first year or second year, you can also take that. ओके, तो आपको पता लग गया होगा क्या क्या चेंजेस होंगे 2 साल के होने पे एमसीए पे आईजीडीटीयू में। उसके अलावा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि यार क्लास साइज कितना होता है, जनरली वेरी कर सकता है हर बारी कि क्लास में कितने बच्चे हैं, और हॉस्टल और मेस को आप किस तरीके से, कुछ आप आइडिया बता सकते हो कि हॉस्टल की कंडीशंस क्या है और कैसे हैं? Okay, as I already told you that the campus is very heritage kind of a campus. So hostels are newly made now and they have been under construction when I was passing it out this year. So hostel ki condition is really good. You will get dandiya nights and certain stuff like birthdays, different freshers from the campus and different farewell as well. So some other functions would always be there and you will get a better chance to communicate with your hostel roommates and all that. Also, coming to the mess part, we will say that in 80,000 rupees of fee structure for hostel for 1 year, mess, including the mess part as well. So mess ka khana is really good. I won't say that it's really bad. It's very good, and it's a kind of a thing that you can always connect to your mess warden and a mess constructor that you will be able to eat something or not. So it's really okay. So at your part, coming to the canteen part, I already told you that the canteen is not so you can just order from Swiggy or Zomato and you can enjoy your food. After that, coming to first part is class like size. If yes, class size. Class size does vary sometimes, but always for MCA, the total or the maximum class size would be 60. There will be 60 students will be allowed to sit in one class, and there won't be any sections. So there will be only 60 seats in IGDTU for MCA, as per me, till last year. Okay. And class size will vary if someone is leaving IGDTU for some other reasons. Then only the class size will vary, else not. Okay. तो आपको पता लग गया होगा यार क्लास कैसी है, हॉस्टल कैसे हैं और यहाँ का मेस कैसा है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यार इसका एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, क्या उसका पैटर्न जो होता है वो वेरी करता है निमसेट से, और पैटर्न अगर वेरी करता है तो क्या वेरी करता है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है सिलेक्शन का? Okay, coming to eligibility criteria, you should be part of some mathematics subject in your bachelor's and or from computer science background. There were people in my batch who did BSc chemistry or BCom honors. So there is no like such kind of specialization that you should do, but you should have mathematics or computer science with you. And coming to the part of this, that was it varying or not, entrance exam? So yes, it is varying always. It is somehow simple maths in entrance exam of IGDTU than NIMSET, and it is similar to NIMSET. It will come with logical reasoning, mathematics, and simple general English, you can say, and then computer science. It's called computer awareness basically. Okay. So the badge, I could say that the mathematics is very hard in NIMSET,
but not in IGDQ entrance exam. You will be able to crack it in if you are having good basic concepts of mathematics into your mind. You will be able to do IGDQ entrance exam in a very clear manner. So it's not a problem. Okay. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यार यहाँ के एंट्रेंस कैसे होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि IGDTU की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल फ़ीस कितनी है, और अगर फ़ीस आप बताओगे तो ये भी बताओ कि लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। Okay, so coming to the fees part, as I already told you that 80,000 initially I have paid, so it might vary from 80,000 and sometimes it's 75,000 as well. So I would say that it might vary according to the structures. So it will go from 75,000 to 88,000. Maximum would be 88 initially if you are joining, and by going forward you can say that it can become 25 or 75, sorry. So coming to next part is that hostel, it's 80,000 per year. As per as I was a day scholar, so I wasn't aware about it. So I have asked from somebody who was a hostler. So she said that it's 80,000 per year, including the mess part and all the functions that are going to happen in hostel, all the yoga class and whatever happened in hostel. It's all included into it. So it might vary. It might vary. All the time it can. Okay, so loans are available or not? Yes, loans are available. Sometimes what happens is that if you are going for admission in IGDTU, there might be a possibility that you can ask for loan. And in education loan, you can take it from any other bank, whichever you wanted to. And this loan could be verified after your education system has completed yet. And then you will be able to just justify that you will be able to pay this loan through your job or whatever situation is. So then you can take loan. I won't say that it is very much available into the campus itself. You can take the loan from any other respective branches of banks or whatever you wanted to see. Okay. तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो यार फीस की वजह से कोई भी कॉलेज ना छोड़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार सबसे ज़्यादा मोस्ट इन डिमांड जो क्वेश्चन रहता है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम प्लेसमेंट आप एक बारी बता दो सबको। Okay, so I would rather say that I was the management head of training and placement cell last session. So I had very close interaction with all the companies who had came from MCA and for even though the startups as well who came for the placements of MCA as well. So I would say that placement is really good. The highest package this last batch was 30 lakhs CTC. You can get more if you are sitting for like companies like Goldman Sachs and all. So if you are going to pursue it, if you are going to crack the test, then the CTC is yours, I would rather say. And average package, I would say like 10 to 6. 6 would be the minimum. Or if you are going for any other small startups, and if you're not going for developer profile or going for any other like analyst profile or something, then it might go lesser CTC, but it's totally your choice. You can go for functional, non-functional, technical, non-technical part of things as per your criteria. As per your desire, you can choose any of the company and sit for the test, clear the test, and then the job is yours. That's it. It's really simple here. इसके बाद मेरा इसी में ही क्वेश्चन ये होगा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं यहाँ से। Okay, so coming to the batch size, as I told you that 60 students were there. In my case, 57 were there. So out of those, only 7 were left who were totally unplaced. 15 were there who had double offers with them. They have to choose इसमें जाना है. Okay, and rest all others are placed with internships. You will get 6 months internships as well most of the times. Okay. कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं और क्या हमें बीटेक के साथ बैठना होता है प्लेसमेंट में? Okay, starting from the companies, MCA के लिए last batch we started with Goldman Sachs itself. So there are companies like Cisco, American Express, JP Morgan, Morgan Stanley, Google, Microsoft is for BTech. But if you can just put your efforts into the test, then you can sit for them. And coming to the part, the most of the students were picked up last year were from Cisco.
Okay. So Cisco has given the most appropriate kind of CTC and many kind of profiles as well. Yes. So there are certain companies like Intune as well. So there are very prestige companies, those who are coming to the part, and I myself was placed in Yamaha. ओके तो यार अभी तक जो मेरे बेसिक क्वेश्चंस थे मैंने सारे पूछ लिए इनसे और आपको क्लियर हो गया होगा, एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी IGDTU की कि बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ वुमेन के लिए। अब ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने पूछ लिए, अब जो आपके क्वेश्चंस थे जो आपने डाले हुए थे कमेंट बॉक्स में वो सारे मैं इनसे पूछूंगा। तो यार पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट इज़ द प्लेसमेंट सिनेरियो ऑफ MCA इन IGDTU? क्या क्राइटेरिया होता है कि मेरी अगर ग्रेजुएशन में 60% से बिलो है तो क्या मेरी प्लेसमेंट होगी, या फिर मेरी 12th में 50% है तो क्या मेरी प्लेसमेंट होगी? It's like the specialization is all about what you want to do. Firstly, you have to choose which profile you want to sit for. Secondly, आपके जो percentage है वो आपके companies to companies vary करते हैं. कोई कंपनी कहता है कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखो, कोई कंपनी कहती है that it should be 60% and above, 75% and above, and there are companies as well those who take only 80% and above in MCA. So they have their own criteria. It can vary from company to company, and I would rather say in the case of MCA, you should always score. If you're okay with 60%, if you have scored 60% in 12, 60% in your bachelor's, then 60% you are scoring in MCA as well. So it's okay. You will get a good average package. ओके तो आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि टीचर्स कैसे हैं वहाँ के, और एक्सपोजर एंड करेक्ट गाइडेंस फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव मिलती है वहाँ पर या नहीं? Exactly. It's there. Teachers are very educated. Most of them are PhDs, and they know how to teach in a very well manner, because the practicals part, the labs part, and the theoretical parts are very well managed. Okay. And most of them will help you in going in certain hackathons, certain papers, presentations, then competitions are there. Certain kind of seminars and webinars are also happening all the time. In IGTTU, there are always certain kind of webinars going on anywhere. At every alternate days, you can find any of the machine learning, artificial intelligence. There is a lot to learn from students as well as from the teachers as well. The faculty is really good. And I would say that the exposure is also there because there are two types of festivals that are happening in IGDTU. One is INNOV, which is totally technical festival, and second one is Tarangana, which is cultural. So it's good. If you wanted to come to IGDTU, you have a good exposure to all the things. ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस कॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कुछ इसके ऊपर, वैसे तो आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ बता दी, लेकिन फिर भी एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आप अगर बता दोगे तो बढ़िया। Okay, coming to the specialized thing is that कि आपकी classes miss नहीं होंगी. You will be at your class at any time, और आपको हमेशा जो टीचर्स होंगे वो हमेशा सपोर्ट कर रहे होंगे, बट वो कभी भी मास बंक और ये सब नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे. So you have to go to the class. And in the case of certain difference, it's first university, technical university for women. I would say that is the first and the foremost thing, which is very much different from others. And MCA itself is something which is to be conducted with BTech, who all are getting very much high paid placements every year. उनके साथ करना competition अपने आप में बहुत बड़ी बात है. So आप लोग तभी भी कर पाते हो, तो it's good thing. For girls, I would say that if you're giving NIMSET, if you're giving BHU or whatever, whichever entrance test you are giving, if you are a girl, you should come to IGDTU. You will get exposure, you will get placements, you will get money, you will earn certain respects, you will get certain communication skills to improve. There are various societies to cope up with your communication skills and all, and you will get most of the exposures you wanted to have in MCA. ओके तो आई होप यार इस कॉलेज में कितनी खासियत है, बहुत से लड़के यहाँ पर जल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, और यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं या नहीं? ओके, यस, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं, और सिर्फ अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बहुत सारी आती हैं जो आपको अलग अलग प्रोफाइल्स भी ऑफर करेंगी. आपके अपने डिजायर के हिसाब से आप किसी भी प्रोफाइल में बैठ सकते हो. और कमिंग टू द पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर पार्ट वाज लाइक कि IGDTU में ऐसा होता है समटाइम्स दैट इट इज ऑल अबाउट योर एक्सपोजर,
I told you कि I myself was not from computer science background. I was from mathematics. So it is very much important for you to get exposure. So for that thing, there are many societies, webinars, your faculties are conducting so many webinars every day. So you can go learn and achieve something. Then from the next time onwards, you yourself will be giving your webinars and all. You can join the Techno Fest, which is there called Innov, and you can just do whatever you wanted to. So the technical background or the technical surroundings that you are seeing is totally very much that you will get very good exposure to the technical part. So it's very, I would say that it's a very technical university. So just be good for that. ओके तो यार यही कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, और बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे और वो पहले ही आंसर कर चुकी हैं। तो यार ये सारी वीडियो थी एक छोटी सी IGDTU पे, और हमें पता लग गया कि कॉलेज कैसा है, क्या क्या इसकी खासियत है, प्लेसमेंट कैसी है, हॉस्टल कैसे हैं, मेस कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा अक्षिता जी का कि यार उन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच।